Everyone. So let's start our next exercise, that is exercise 3D and 3E, in which we will study the properties related to multiplication and division of whole numbers. So let's start. First, the properties of multiplication. The first property is closure property. So what it says, if a and b are two whole numbers, then a multiply b is also a whole number. Like we read in the addition properties that if we are having any two whole numbers, then if we apply the operation of multiplication in them, the resultant, the answer is also a whole number. This is called as closure property, and the operation we are using here, or the properties we are studying, are of particularly multiplication. So let's have an example. Like a is equals to 11 and b is equals to 8. Both are whole numbers, so when we multiply them, the answer is also a whole number, as 88 is a whole number. Let's move to the next property, commutative law. So what it says? It says that if a and b are two whole numbers, then a multiply b is equals to b multiply a. Like if we are having any two numbers, both are whole numbers, then the arrangement doesn't matter if we are multiplying them. Either we multiply a with b or b with a, the answer is always the same. Like we have in the example, a is 7 and b is 8. First we did a multiply b, which is 7 into 8, and then we did b multiply a, which is 8 into 7. The answer comes out to be 56 in both the cases. So both the sides are equal, so commutative law applies in multiplication. Now let's, it is multiplicative property of 0. What it says, that if we have any whole number, supposedly a, it can be any whole number, if we multiply it by 0, the answer will always be a 0. Okay, we have taken an example, a is equals to 12. We multiply it by 0, we get 0. We multiply 0 multiply 12, the answer is again 0. The multiplicative property of 1. So what it says, that if we have a whole number, supposedly a, if we multiply it by 1, the answer is the same whole number, which is a for now. We have taken a is equals to 12. If we multiply it by 1, the answer is 12. If we multiply 1 multiply 12, the answer is again 12. So if we multiply any whole number with 1, the answer is always that particular whole number. Let's move to the next property. It is associative law. We have read this law in the addition properties also. See what it says. Now we, in the commutative law, we had two numbers a and b. Here we are having three whole numbers, a, b and c. So what we have to do, if we multiply first a and b and then we multiply the resultant by c, is always equals to, if we are first multiplying b and c and then we are multiplying by a. So let's solve it by taking an example. It would be easier. A is equals to 9, b is equals to 7 and c is equals to 12. Taking the left hand side of our particular equation, we are first multiplying 9 and 7, which is 63, and then we are multiplying by 10. Okay, the answer is 630. Now we are taking the right hand side, which is the RHS. First we are multiplying 7 and 10, which is b and c. That comes out to be 70, and then we are multiplying by 9. The answer is 630. So we can say that associative law applies in multiplication operation in whole numbers. Let's move to the next property, law of multiplication over addition. Please see it carefully. It is a very important law and a bit different. So please see. See, we are having three numbers a, b and c, and we are having two operations in this, multiplication and addition. Firstly, it is written as a multiply b plus c, and then on the right side what we are doing. See, we are distributing a with first with b and then with c. What are we doing? We are first multiplying a with b, then we are putting it in a bracket, and then we are using the addition sign and then giving the a again to c,
A multiply C. You see an example to verify this particular property, that if we are using this one, is it correct or not? We are taking A equals to 16, B equals to 9 and C equals to 8. First we will solve the left hand side, okay, which is A multiply bracket B plus C. We are writing 16 multiply 9 plus 8. Obviously we will first solve the bracket. So 9 plus 8 comes out to be 17. We multiplied 16 and 17 and we got the answer 272. Now we are taking the right hand side, which is the RHS. We are using A equals to 16, B 9, again A 16 and C equals to 8. So first what we did 16 multiply 9, which is 144, and then we did 16 multiply 8, which is 128, and when we add both of them we get 272. The logic we are using here in solving the question is that we are using board mass. Board mass is, first we have to solve the brackets, so that is why I am solving the brackets first and then the outer operation I am using. So as both the answers came out to be same, and the last line, which is the green one, you can see that 16 multiply 9 plus 8 is equals to 16 multiply 9 plus 16 multiply 8. It is nothing, just solving our questions in a bit easier way. It is just a property. Okay, let's move to the next one. Distributive law of multiplication over subtraction. In the last one we did for addition, now we are doing for subtraction. It is exactly the same property. Like see, we are just written A multiply B minus C, and then we can write A multiply B minus A multiply C. We are again using to verify it. We'll verify it. We are taking A is 11, B is 6 and C is 4. So we are verifying the LHS part first, left hand side, which is 11 multiplied 6 minus 4. So it is 11 multiplied 2. Other answer is 22. Okay. Now we are using the right hand side. We are putting the values of A, B, C respectively. It is 11 multiplied 6 minus 11 multiplied 4. That is 66 minus 44. The answer comes out to be 22. So our distributive law is verified over here. So we can write that the LHS part is equals to the RHS part. It will be a bit better understanding for you all. So in the first part, what we have to do, we have to find out the product 785 multiply 94. Okay, so it is an easy product, you can directly do the multiplication, but what we are going to use, we are going to use the distributive law over here. We can write 94 as 100 minus 6. I hope no one is having a problem. Now we are going to distribute it, like first we'll give 785 to 100 and then we'll put a minus sign in between, and then again 785 by 6. Okay, so we just got two parts of this question. We'll multiply first 785 by 100, then we'll multiply 785 by 6. We'll get the answers and we'll subtract it. This is the use of the distributive law you just read. Okay, let's see the second example. It is again of distributive law. Okay, the question is 968 into 73, then again 968 into 27. Okay, so uh, in the left hand side of addition sign and in the right hand side of addition sign, you can see that there is a common number in between, same number, एक जैसा number है, that is 968. तो आप क्या करेंगे, आप 968 को बाहर निकालिए, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लिखिए और 73 प्लस 27 करिए. अब याद करिए ये जो पोर्शन है इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाता है. तो इसी तरीके से वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन. इसको यूज़ करने से देखिए हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया है. हमें अलग से इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है. हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, हमारा ब्रैकेट आया आंसर 100 और 100 से इट इज़ मोस्ट ईजी टू मल्टीप्लाई. ओके, सो द मेन use of distributive law is just to reduce our time and do our calculations in a bit easier way. Similarly, see the third example. Here you are just taking common 1063, उसको कॉमन निकालिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, आपका इस बार सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है. आपने 127 माइनस 27 किया, आपको 100 आंसर मिला, एंड देन अगर आपने 100 से इजीली मल्टीप्लाई कर लिया, यू गेट एन आंसर. सो इजी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया और हमारा आंसर आ गया. थर्ड क्वेश्चन अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव का ही है. सी, इसमें हमें
अब 3 पार्ट्स दे रखे हैं, लेकिन तीनों पार्ट्स में 8937 इज़ अ कॉमन नंबर, बस हमें उसको बाहर निकाल दिया और उसके बचे हुए सारे उसके जो पार्टनर्स थे सबको अंदर लिख दिया उसके ऑपरेशंस के साथ, जो कि एडिशन है, और जब सबको ऐड किया तो आंसर आया 1000। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो गया और डायरेक्टली हमें उसका आंसर मिल गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ये सारे यूजेस हैं। नाउ सी, और दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, ओके। अब इसमें दे रखा है हमें, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ का यूज़ किया। एसोसिएटिव लॉ का यूज़ हमने कैसे किया, हमने पहले 25 और 40 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि थोड़े थोड़े कैलकुलेशंस हमें याद रखने पड़ेंगे और जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमें याद होते जाएंगे। तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हम जब भी 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 100 आता है। तो हमने इसलिए पहले इनको मल्टीप्लाई किया। तो देखिए अब हमारा आंसर कितना ईजी हो गया, वरना हमें पहले 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर हम 40 से करते तो कॉम्प्लिकेट आंसर होता। नाउ थर्ड पार्ट हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही करना है, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था वो ही है सेम। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में से 9 को लिख दिया 10 - 1, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगले में उसको लिख दिया 100 - 1, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर 999 को लिख दिया 1000 - 1, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कितनी ईजीली हमारी सारी कैलकुलेशंस इसमें हो गई। नाउ सी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में हमें एक प्रॉपर्टी करनी है, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। What does it says that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder। आप supposedly एक क्वेश्चन देखते हैं हम, उससे हमें पता चलेगा what is dividend, divisor, quotient and remainder। 15 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हम देखते हैं, इसमें डिविडेंड है 15, डिवाइजर है 2, मतलब जिसको हमें डिवाइड करना है दैट इज डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा है दैट इज डिवाइजर। तो 15 इज द डिविडेंड एंड 2 इज द डिवाइजर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 7 के टेबल से जाए 7 पे करेंगे तो 14 आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो 7 क्या है, इसका क्वेश्चन है, एंड रिमाइंडर क्या है, इसका 1 है। अब हमें इसमें हमारे क्वेश्चन कैसे, हमें लेट्स सी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हमें करना है और हमें चेक कैसे करना है हमारे रिजल्ट को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड दिस बाय दिस एंड चेक द रिजल्ट। ओके, अब डिवाइड तो हम करेंगे भाई, 31 को कर दिया मैंने 535 से, पहले 1 जा से गया 31 जो बचा, फिर 7 जा से गया, रिमाइंडर आ गया 8। डिविडेंड है 535, डिवाइजर है 31, क्वेश्चन है 17 एंड रिमाइंडर है 8। तो क्या उसने मेरे को कहा था कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो याद रखो, अब आपको चेक करना है तो आप करेंगे पहले डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई, मतलब 31 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आया 527, फिर उसमें रिमाइंडर को ऐड करोगे तो आया 535। अगर ये 535 आपके डिविडेंड के बराबर है, हाँ जी है, हमारा डिविडेंड भी 535 है, तो इसका मतलब है जो आपका डिवीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने जो डिवीजन किया है दैट इज़ रॉन्ग। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेम ऐसे ही है। 257 को डिवाइड किया 53068 से, पूरा सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर आ गया, डिवीजन है हम सबको करनी आती है। नाउ हमने क्या किया, हमने डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया, कर लिया सॉल्व, उसमें हमने रिमाइंडर ऐड किया, तो हमारा जो आंसर आया वो हमारे डिविडेंड से मैच होना चाहिए। अगर वो हमारे डिविडेंड से मैच हो जाता है इसका मतलब आर आंसर इज करेक्ट। सो दिस ऑल in your exercise 3D and 3E. Now you can easily solve your exercises. Please try and have fun. Bye bye.